नमस्कार, you all are watching me at पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे आज के शो के लिए, आज के इंटरव्यू के लिए मैं इतना ही कहूंगी, लाइट्स कैमरा एक्शन, बट देयर इज मच मोर बिहाइंड दिस एक्शन। कई बार आप नर्वस भी हो जाते हो, कई बार बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती है और इंडस्ट्री में भी चलती हैं बिहाइंड दिस एक्शन सीक्वेंस। सो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। वेल, सारी पॉजिटिव बातें करेंगे बिकॉज वी आर वेरी पॉजिटिव पीपल हमारे बीच में। Brilliant, talented and versatile actors of the industry. I'm talking about very hot Rajeev Khandelwal, who's with us right now, and the most versatile actor. आज बहुत अच्छे भी लग रहे हैं वैसे, the most handsome. जनरली अच्छा नहीं लगता मैं, जनरली अच्छा नहीं लगता। आपके स्पेक्स ही मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ, नंबर नहीं है, बस ये ऐसे फैशनेबल स्टाइल Last time you were not wearing this, na? Yeah, I don't have a number actually. You don't have? My stylist just made me wear this. Yes. You don't have. Suiting me? Absolutely. Keep So that Emraan in mind. Hashmi is with us right now. Very beautiful, gorgeous and talented Shriya Saran. And hot and happening Mahima Makwana. बहुत बहुत सारा सबका। Mahima Makwana. अच्छा, हैरान क्यों हो रही हो मुझे ये बताओ। Like, are you talking about me? Are you like really me? But it's so nice to see a woman complimenting another woman. Oh, wow. So yeah, That's incredible, no? lovely. Thank you. थैंक यू सो मच। वेल, इमरान आपसे ही शुरू करना चाहूंगी पहले मैं। अब आप प्रोड्यूसर प्ले कर रहे हैं इसमें, तो जी। अपना रिज्यूमे या प्रोफाइल आपको भेज दें या आप सिर्फ सुपरस्टार्स के साथ ही काम करते हैं? नहीं, रघु खन्ना सिर्फ सुपरस्टार्स का काम करता है। ओके। बस एक ही एजेंडा है और उसका मानना है कि सुपरस्टार ही ऑडियंस को ड्रॉ करके अपनी फिल्म की तरफ लेके आएगा और बॉक्स ऑफिस खुदा है उसके लिए। एब्सोल्युटली। वेल, अगर मैं बात करती हूँ लाइक ऐसे जैसे गौरव ने भी कहा था ट्रेलर लॉन्च पे भी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द अंडरबेली ऑफ सिनेमा, इट्स अबाउट द सेलिब्रेशन। वी ऑल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बी इट गुड और बैड, एनीथिंग। सो वी ईट, स्लीप एंड रिपीट सिनेमा। सो व्हाट आर योर थॉट्स स्टार्टिंग विद यू राजीव ऑन दैट? Yeah, we do. I mean, all of us, there's a little bit of Hindi film industry or films in everyone's lives. You know, talk about anyone, especially in India, I would say. Talk about Bollywood, talk about Hindi film industry, talk about any film industry for that matter. I think they're super excited, and to know and learn more about what goes on behind the scenes and in their personal lives has always been a subject of interest for most of them. So I'm sure that this is going to be a treat for all those cinema lovers. अच्छा, वैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था जब आपने एंटागनिस्ट प्ले किया था कि इसके बाद एंटागनिस्ट वाले रोल आप लोगे या नहीं, तो आपने कहा था नहीं, मैं डेफिनेटली नहीं लेने वाला हूँ। बट देन प्लेइंग अ प्रोड्यूसर, ऐसा है कि इसके बाद हम आपको प्रोड्यूसर बनते हुए देखेंगे या एक्टर्स आजकल काफी प्रोड्यूसर्स बन भी रहे हैं? नहीं, मैंने एक्चुअली एक फिल्म प्रोड्यूस की थी एंड ये मैंने तय कर लिया था कि इसके बाद नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं शायद सिर्फ क्रिएटिव एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। अच्छा। कुछ लोग जो उनका दिमाग कॉमर्स की तरफ चलता है, फाइनेंस की तरफ चलता है, वो शायद थोड़े और सूटेबल हैं इस प्रोफेशन के लिए। बट हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि मुझे एक प्रोड्यूसर का कैरेक्टर मिला, क्योंकि इतने सालों से, ऑलमोस्ट 25 साल से मैं इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ। तो वो तो तजुर्बा मिल ही गया था कि इतने प्रोड्यूसर के साथ इंटरेक्ट करके उनसे उनकी इडियोसिंक्रेसीज, उनकी जैसे डिसीजन मेकिंग, फिल्म मेकिंग को लेकर क्या होता है, उनका एक नजरिया, और अलग अलग किस्म के प्रोड्यूसर्स होते हैं ना। जैसे रघु एक मास फिल्म प्रोड्यूसर है, तो उसका दिमाग, एंड फॉर अ बेटर पार्ट ऑफ माय करियर, ऑलमोस्ट 15 इयर्स, मैंने जनरली बहुत ही यू नो द क्विंटेसेंशियल मास फिल्में प्ले की हैं, मास हीरोज प्ले किए हैं। तो वो थोड़ा सा नो हाउ और वो इसमें मैंने डाल दिया है रघु के कैरेक्टर में। Even you playing your real life in this, ऐसा कुछ नहीं है, I'm not real life lover, no, yeah. no, even an actress of course. Real That's life. what I'm saying. ठीक ठाक ही है भी, इतनी झंड तो नहीं है। नहीं, मतलब ओह, आप खुद ही रिवील कर रहे हो, खुद ही रिवील कर रहे हो, देखो। That says a lot about your character. Giving away the bloody plot point. Oh, well, It's not that bad. we didn't see that coming. You have a wonderful life, you have a wonderful husband in the show. Yes, बताइए। Yeah, it's not that Nazar na bad. I lag have a jaye good-looking husband, good-looking producer, but no. So I play myself, but I'm not myself. Like I'm a very different person from what I'm playing in this show, which is very interesting. क्योंकि जब मैं पहली बार मिहिर और अर्चित से मिली, तो हम जब शो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो I think we all said that we don't want it to be a caricature of somebody. It's not even me. So then we spoke about, okay, तो इसका past क्या होगा, where does she come from, and what kind of films she's probably done, and what was her breakthrough moment, or how did she meet him, and how did they fall in love. So we kind of created that little story around. That helped a lot.
So yes, I play an actress in this show, but I'm not anywhere close to who she is. I think she's way stronger. She takes things way better than what I do. I don't think I'm as strong as who she is in many ways. I'm different. Absolutely, you are different. Well, Mahima, you playing a journalist and a producer at the same time, right? So what are those? Am I those playing traits? a producer? You are I don't playing a know. journalist, ना? I am playing a journalist. I Yeah. know. मैं ज़्यादा रिवील नहीं करने वाली हूँ, टेंशन मत अपने लो. कर. Raghu अरे Khandelwal वो would like trailer the में fact दिख ही that रहा है you say ना? you're a producer. That we Okay. could see in the trailer also, no? Okay, huh? That we could see a part of chunk in the trailer also. Did No, you you're say- making a It's film. not, it's not I think it it's not is, no? suspense It's not a killer. spoiler. I think it is. It is. No? It Okay. is a spoiler for you? It I is. think कैसे so. हो गया? Don't really Okay, don't. so yes. Too late now. हो गया अभी. अब तो कह दिया. था उससे ज्यादा हो गया. कोई बात नहीं, पंजाब केसरी सीक्रेट होता है चीजें. हम लोग दिखाएंगे नहीं. Yeah, so she. अबे सुबह जो पढ़ के बोला था इससे ज्यादा नहीं बोलना, उससे ज्यादा हमने हो गया. बिल्कुल उसका उल्टा किया है. To be. ये पीछे से जो ऐसे आ रहा है ना, वो नहीं. चाहिए, बस, है ना? Okay, so yeah, Mahika Nandi is an aspiring filmmaker, but क्या है ना, वो एक तरह की फिल्मों में believe करती है, not the kind of films which probably Raghu Khanna would produce or like. So I think most of the time she's at home because there's unemployment in her case. So अपना थोड़ा सा काम घर चलाने के लिए या to just like obviously to make 2 ends meet, to keep her day going, she is and also to get like an idea on probably how films are made. She is a film critic. She's doing an internship at this agency, and she's ambitious. उसे फिल्में पसंद है, but वो बहुत ज़्यादा opinionated है. उसे किस तरह की फिल्में पसंद है उस चीज़ को लेकर. And like आपने कहा, उसकी लाइफ में एक दिन आता है जब उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है. वो आप मैंने नहीं कहा, ये आप कह रही नहीं हैं. मैम, ये आपने कहा है शुरुआत में. And yeah, I mean, she. Don't give out the end, huh? There comes No, a please, day. please give out I the am end. just talking about the day only. I'm talking about climax. He's acting like a producer. Please don't give out the end, no? Leave something for the audience, huh? Some room for imagination. Please say. For Please sure. be There yourself. is- कह दो, कोई बात. So yeah, I mean, there comes a day when her life takes a 360-degree shift, and she's not. It's not an obstacle; it's a full-blown challenge, and it's something that she doesn't see coming. And thereafter, yeah, matlab you'll see how what happens and the challenges and obstacles and how she changes as a person. So, yes, to begin with, जी वो एक film critique है. Oh wow, that's nice. I like your smile. Thank you. And that dimple. Well, Rajeev, you're playing a superstar. और stardom की definition तो हम सब जानते हैं. अभी थोड़ी सी बदल गई है social media के आने के बाद में. There was a time when you were doing a television show. You were a star in every sense. और मेरी मम्मी तो चाहती थी कि दामाद बन जाए उनके, लेकिन देखो he ended up marrying with some other girl, and I ended up marrying to nobody. ठीक है? प्यार में दीवानी थी ना, हम क्या करती. Well, अगर मैं acting और stardom की बात करूँ, मैंने acting की अपनी क्लास में सीखा था कि there is a difference. Stardom is something different. Superstars are different and actors are different. Do you also believe in that? I believe so. In today's scenario, I'm saying. I'm not back in the day. Back in the day, I think there were superstars and there were actor superstars, and they probably never left the realm of acting. मतलब वो कभी भी अपनी acting से उन्होंने कभी focus उठाया. But today's, I think it is more about that a superstar acts in a certain way. It's just more about swag. It's more about the attitude. It's just more to do with a lot other things than just acting, I'm saying. So I think that's the perception that I live with. कि अच्छा मतलब सुपरस्टार हैं तो मतलब हम इतना ही करेंगे और ऐसा ही करेंगे. जो भी कहानियां सुनी है आपने, बिकॉज मैंने तो मेरा कोई बहुत क्लोज इंटरेक्शन नहीं रहा है, बट जितना भी मैंने सुना है और जितना मुझे लोगों ने बताया, that's the perception that I have. Maybe the truth is something else. I wouldn't know of it, but that's what I live with. When you came to the industry, were you intimidated or was there any superstar जिनसे आप काफी inspired थे, non? Yeah, of course I had my, you know, stars. आपके दिमाग में जो होते हैं कि अच्छा these are the actors that I would like not to be like them, but maybe to emulate their career growth and things like that. Shah Rukh Khan, of course, was one of them because you thought that yeah, you know, like an outsider always thinks and connects with him. So there were so many of them, but I was not intimidated as such because मुझे कभी ऐसा सीन आया नहीं मेरा कभी कि मैं किसी बहुत सीनियर या बहुत ही बड़े सुपरस्टार के साथ मैं काम कर रहा हूँ. I think
one moment had happened when I was doing television and when I was taken for an appearance somewhere. I'll just tell you this. So basically, मैं किसी appearance के लिए गया था, एक event था, television से मैं इकलौता actor था, जिसे मुझे लेके गए थे, and वहाँ पे सारे के सारे film actors थे mostly, and I was feeling as it is a little jittery because जब हम chartered flight में गए तो मुझे लगा कि सब लोगों का attitude थोड़ा सा अलग है. अच्छा. ये TV actor है, ये हमारे group में क्या कर रहा है? Oh, ऐसा भी. Yeah, absolutely. तो वहाँ पे गए, and then the MC also was making you feel कि अच्छा आप, तो मैं बहुत कोस रहा था अपने आप को कि मैं क्यों आया इस इवेंट पे यार, बट देन आई हैड टू कम बिकॉज द ऑर्गेनाइजर्स वांटेड मी टू कम. एंड देन एनीवे तो परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ हुई मेरी, एंड देन परफॉर्मेंस में मैंने एक स्टेप भी अपना गलत कर दिया. मुझे बहुत गुस्सा था कि यार एक तो वैसे ही वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऊपर से एक तरह हाथ यहाँ चला गया, सबके हाथ यहाँ जा रहे थे. एंड आई केम बैक एंड आई वाज सिटिंग आउटसाइड माय chalet, एंड मैं अपने पैरों पर करके बैठा हुआ था, एंड आई वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, एंड समबडी, एंड आई जस्ट रियलाइज कि सामने से करण और SRK, ये दोनों के दोनों दे वर वॉकिंग देयर. एंड मैंने कहा यार अभी है कोई स्कोर, यू नो, जस्ट ट्राई एंड बी अ लिटिल प्रॉपर एंड व्हाटएवर. एंड आई वाज ऑफ कोर्स इंटिमिडेटेड दैट अभी आके ये बोलेंगे ये टीवी एक्टर ये था क्या ही, बट दैट डिडंट हैपन. So they both were walking away and I was trying to just look away. I'm talking about 2006, 2005 or 6. Okay. And both of them actually walked to me. And Karan and SRK both introduced themselves कि Oh, wow. hi, I'm Karan Johar. मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, thank you very much. SRK says hey, this is Shah Rukh Khan. मैंने कहा मार दो मुझे. And then anyway, so both of them said some good things about me, and then whatever, and so that intimidating वाला part था जरूर. But when you meet some people and then you realize that they are much more than how you look at them, just the way probably somebody looks at me and think that I'm an actor and would have a perception about me or in me or you know, Shriya, or for that matter Mahima. So it is that was the only time I was saying that I got intimidated while just looking at them. उसके बाद में I think the more you develop their self-confidence, the more you are. I think it's about breaking your own perception. You think Absolutely. people are thinking like that for you and you think like that, but most of the people, I mean, at least what I've encountered, most people only have love for you. You think and then you think and overthink and then think and then yeah. अच्छा, being into the shoes of a producer, मैं एक जरूर पूछना चाहूंगी आपसे. You are always on the creative side. कभी ऐसा रियल लाइफ में हुआ है कि बाद में ऐसा मन किया हो किसी प्रोड्यूसर को बोलने का जिसकी बात आपको अच्छी नहीं लगी, कि अरे यार मेरा वक्त आने दे फिर मैं तेरे को बताऊंगा? इमरान, ऐसा कोई पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं हुआ है. यू नो, आई थिंक हमेशा क्रिएटिव डिफरेंसेस रहे हैं प्रोड्यूसर्स के. एक उनका भी एक थॉट प्रोसेस होता है. आई थिंक प्रोड्यूसर का जो रेल्म होता है जनरली, अगर आप सिर्फ एक प्रोड्यूसर हैं तो वो फाइनेंस और कॉमर्स तक ही सीमित रहता है. बट वहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी और स्क्यू हो जाती हैं, क्योंकि वो फिल्म्स को, और दिस इज द फ्लिप साइड, दिस इज आई थिंक द नेगेटिव साइड समटाइम्स, वो फिल्मों को सिर्फ प्रपोजल के तौर पे देखते हैं और उनके पास एक कुछ भी क्रिएटिव बोन नहीं रहता है, और वो अपने एक्टर्स को भी फिल्मों में या उस प्रोजेक्ट में एज कमोडिटीज देखा करते हैं. तो वो एक तरह से मेरे सेंसिबिलिटी से कहीं अलाइन नहीं करता है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि वो बड़े क्रिएटिव हैं, व्हेन एक्चुअली दे डोंट हैव अ क्रिएटिव बोन इन देम, और फिर आके बैठ जाएंगे बैकग्राउंड स्कोर में. मैंने ऐसा देखा है, बैकग्राउंड जब स्कोर बन रहा है या बैकग्राउंड फिल्म का जब बन रहा है तो वो खुद के जो पॉइंट्स ऑफ व्यू डालेंगे जो बहुत ही खराब है, एंड आपके परफॉर्मेंस को लेकर वो थोड़े नुक्स निकालेंगे, और एक्चुअली दे डोंट रियली नो. आई थिंक हमारी फिल्म मेकिंग में सब लोगों के जो डेजिग्नेटेड जॉब्स हैं, वी शुड डू इट प्रॉपर्ली. एंड यस, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हैं, बट बियॉन्ड अ पॉइंट आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं. तो ऐसा कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है where producers really enforced his thing and said that, you know, that this has to be my way or the highway. I think ultimately I've just been blessed कि हमारी जो फिल्में बनी है, it's been very collaborative. और the best idea could come from the next person in the room. It need not just come from the director or the actor. I feel that, and that's the way the best films are made. तो वही एक collaborative atmosphere होगा तो अच्छा होगा. बट वो मेरे सवाल का जवाब ये मतलब मुझे मिला नहीं कि किसी को मन किया कि मैं तुझे बताऊंगा ऐसा नहीं. ऐसा क्योंकि मैंने कहा कि ऐसी नौबत नहीं आई ना, ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं आया जहाँ पे किसी ने कोई हावी बना या किसी ने ऐसी बात की मुझसे. कभी ऐसा नहीं हुआ है. सिर्फ एक बार जो मैंने अभी पहले दोहराई कि एक प्रोड्यूसर ने एक बार जब फिल्म शायद थोड़ी रेड में चली जा रही थी, ओवर बजट हो रही थी, तो ही एक्चुअली टोर द पेजेस ऑफ द स्क्रिप्ट इन फ्रंट ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑन द फिल्म सेट. सीरियसली यहाँ पे थोड़ा सा एक झड़प भी हो गई थी, झगड़ा भी हो गया था वहाँ पे, बिकॉज
he just felt that उसके जो budget allot किया था उससे उसके थोड़ी over मुताबिक। budget जा रही है. But eventually came around and he put in the money and it was not that bad. But ऐसी चीजें होती हैं. I think eventually when you're putting in the money, when your own money, generally जब आप खुद का पैसा जा रहा हो film में, it becomes extremely murky and very, very scary for a producer. Shriya and Mahima, yes, you want to add something? I met some really interesting producers like Suresh Babu is very, very interesting. He has this immense knowledge. And so when you sit and talk about films with him, it's really interesting because you learn so much and all the stories and all of that. I remember he told me once, travel all by yourself, alone as much as you can while you can. And I didn't take it seriously, but I travel a lot. And now looking back, I'm glad I did. I just picked up my bags and traveled on my own. He was a very, very sweet guy. But then there are people who are really funny. Like the producer will come and say, "ये white सलवार कुर्ते में क्यों है? इसको yellow में होना चाहिए." अच्छा. So you're like, where do we get yellow salwar kurta from now? That also happens. That happens a lot. I don't know if you've seen that before. Yeah. Probably. I think, they don't do that with heroes that much because they're very scared of you guys. They're not so They're scared of these us. guys. Okay. Yeah, of course. They have their whole... An actress is always the second, whatever. So I've changed my clothes. I don't like this orange top. It should be a red color because it's raining. I mean, it makes no sense because the cameraman is okay, the director is okay, but then you need a red top. So all that kind of stuff also happens a lot. So there are both sides to it. You meet some really interesting, very switched on people who you learn a lot from, and there are people who you look back and right now you're very upset, but then you laugh at them. But having said that, I don't think as a personality, I am someone who will say, मैं तेरे को बाद में देखूंगी, because I'll only forget about it. I'll only will laugh मैंने खुद about पे रख के बोला था कि कभी-कभी ऐसा आ जाता है ना मन में, ऐसा थोड़ा revengeful मैं तो attitude खुद ही वाला। भूल जाती हूँ कि इसने कुछ ऐसा किया था. Then I look at them and then I'm like, oh shit, you were mean to me. But I genuinely forget about it. अच्छा, my next question goes to you, Mahima. Rejections are also a part of our industry, part and parcel of the industry. So did you face any, और वैसे भी मतलब मुझे लगता है वो everyone is replaceable ना, तो लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं. वो एक वर्ड मैंने नया इजाद किया था, डिस्प्रेशन में आ जाते हैं हम जब हमारे साथ ऐसा कभी होता है. So कभी ऐसा हुआ कि आपके बदले किसी और को रोल मिल गया और आपको मिलने ही वाला था? I mean, obviously rejections are a part and parcel of our profession, and I feel जब मैं transition, while I was auditioning, there were too many instances where I had reached the last leg, where we were about to get started, कोई shoot शुरू होने वाला था और आप replace हो जाते हो, and it does get very disheartening क्योंकि also I'm the kind of a person which I थोड़ा सा मुझे वो भी change करना है. My life used to revolve around my profession, which needs to take a back seat. So yeah, rejections are there. I mean, and at the end of the day, I think through Showtime, what I've understood is the maths from the producer's POV, because there are some decisions जो वो लेते हैं not because they want to, but they have to. So yeah, but you actors are vulnerable. We are insecure as people, and you do take rejections to your heart. But I think धीरे-धीरे probably with time you tend to develop thick skin. Yeah. Thank you so much, all of you, for being so nice and warm. Thank you. Thank you. Thanks a lot.